Hi everyone, good evening, and hi Karen. I hope you're doing good. It's a request to every participant over here. Kindly inform your teams once, just give them a call, drop them a message that our mentor Karen has already joined the session. So you can invite your teams quickly so that they can also take benefit out of the session. In the meanwhile, I would like to introduce you, Karen. Hi Karen, by the way, how are you doing? Hello. Good morning from over here in the US. Yeah, we are having evening over That's here. right. Yeah. Yeah. Okay. As I would like to introduce Karen to each one of you. Today Karen will be taking our mentorship session, and she's a diamond director already, and she's a global mentor to our Indian market, and that's a privilege to us, to get to learn from such wonderful leaders who are doing wonders in their area. So we are really excited to listen to you, Karen, and I hope like whatever you're gonna train us, we are going to take maximum benefit out of it, and we are gonna just do boom in our business. So over to you. Please let just a second. Let me my slide share. Yeah. Great, Let, great, great. Thank you. Thanks for that intro. We just want to make sure all the sound is working. yes, absolutely. You're Everybody, very clear. yep. Yes. Everybody, great, 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 great. Fabulous. All right. So I've got the whole hour, huh? Yes, Yay. absolutely. Yeah. And we are super excited to have you with us. Oh, thank you Also, so much. just give me a second. Yeah. Let me just talk to them in Hindi. So, आप में से किसी को any one of you would like me to do the translation इस meeting का आप translation चाहते हैं हिंदी में. So we can also do the translation of this session. Whatever Karen will be teaching, I'll be basically translating it to you in Hindi, of course, so that you can understand better. Is that okay with you? अगर आप में से किसी को रिक्वायरमेंट है हिंदी ट्रांसलेशन की तो आप प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए देन आई विल बी डूइंग द ट्रांसलेशन यस आई हैव रिसीव्ड द रिक्वेस्ट टू डू द ट्रांसलेशन कैरन सो या that's how you will be training and I'll be translating. Is that okay? All right. Yeah, Okay. So do you need me to speak slower, perhaps? A little slower? a little. That's one. I'll just try to match up with your pace. All right, all right, right. Will you be doing it in real time? Like I'll hear your translation? Yeah, of course. Oh, so I'll Yeah, speak and then I'll you hear you you speak. speak first, then I'll do the translation. Okay, so do you want me to pause Yes. after I? Okay, okay, okay. All Yes. right. Yes. Let's see. Now, okay, and we're recording, which is great because if people can't attend today, they'll have the recording, which is fabulous. Yes. And welcome everyone. It's great to connect this way. Isn't it just a blessing to be able to connect across the pond? And I'm out here in Southern California just getting my day started, and you guys are out there with the end of the day. So, and as you can tell, I have a little accent. I'm actually originally from Australia, in case you didn't know. So I bring you a little flavor of Australia, a little flavor of the US, and I've been with USANA for nearly 21 years. That's wonderful. Yes. So what I bring to you is my experience. So that's what I really want to bring is real life experience of how I grew my business. And the topic is, of course, women, and that is how I've grown my business. So just so you know, everything I share today comes from my own personal experience. And if you apply this, you can have that same success that I've had. It takes patience, it takes commitment, and it takes daily action. So I have some handouts for you. I'm going to share my slides now. I've got some slides so we can stay really on focus with this topic. And beautifully, this was a chosen topic by you, Yes. the Indian community. So about attracting women with purpose. So I have this is basically how I teach my team. So of course, once you grow your business, then you get to teach your team. So do you need me to pause or you're just doing this in real time? Yeah, I'm doing it now. Yeah, it will be great if you'll just pause for a second and I'll take care Uh-huh. of it. Okay.
So, hi everyone. Karen is saying she is with USANA. ये USANA के साथ last 21 years से हैं and इसने overall Karen ने जितने भी over these 21 years she has worked really hard. उसने बहुत मेहनत करी है, daily actions लिए हैं और commitment और consistency के साथ काम किया है and that's how she is a diamond director और इसी तरीके से वो हमें help करेगी। और आज का जो topic है that is कि हम वुमेन को पर्पस के साथ कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज कैरन हमारे साथ डिस्कशन करेगी। यस कैरन, ओवर टू यू। Beautiful. Okay. So the structure today, and as I said, this is all very practical. I have a formula called the inviting formula, which I'm going to teach you today. And we're going to do these 6 things today. So the first of all is aligning your message based on her pain points. And I'm going to explain what that means. Then using language that connects. Then building your email marketing system. And if you already have one, great, you can make it better. If you don't, now's the time to start. And following my inviting formula. And I was asked to talk about the biggest mistakes. So we're going to talk about that. And then we're going to get into some action. I'm going to actually give you homework after today. वंडरफुल। सो आज की मीटिंग में कैरन हमारे साथ डिस्कस करेगी इनविटेशन पॉइंट्स कि हम कैसे इनवाइट कर सकते हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेज जो हम अपनी मीटिंग में यूज कर सकते हैं जो एक्चुअली लोगों से कनेक्ट करने में हमें हेल्प करेगी। इसके साथ साथ ईमेल मार्केटिंग सिस्टम कैसे बिल्ड कर सकते हैं हम उसके बारे में बताएंगे। और लास्टली कुछ बिगेस्ट मिस्टेक, सबसे बड़ी गलतियां जो हम करते हैं हमारी उसाना बिजनेस में, उसके बारे में बात करेंगे और कुछ एक्शन स्टेप्स जिनके ऊपर हम प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा हमें। Over. Okay, let's get started, huh? Okay, the first thing is when you're speaking to women, you need with the word women, and I was asked to speak about speaking to women, and that's too broad. You have to speak to the specific life stage. That's how I have grown my business. Now, I've been doing this 21 years, so I've been through many life stages. So when I first started USANA, I was a mum with young kids. So that's who I spoke to. So what are the pain points of these women? These women are busy. They're interested in their children's health. So they want to know about children's health and nutrition and smart snacking and non-toxic shampoos and sleep and extra income, little extra money. And they can do that through what we call redirectional. I'm not sure if you use this term in India, but like for your family, the shampoo, the skincare, the snacking, the shakes, these all, you buy these from USANA now. So you can see what we're thinking here is we're speaking to the pain points of the life stage of the woman, and where I suggest we attract who we are. So I suggest you, whoever you are listening to this, wherever you are in your life stage as a woman, go there, start there. If you're around this, like the midlife focus, what are those pain points? Weight, immune health, detoxification, gut health. Now this group, because this group is so busy, there's not a lot of extra time for connection and community, but this group is starting to want community. They want to be part of a meaning and purpose because maybe their kids have left for college, right? So you're understanding the needs. And if there's one word today that I will keep saying, it is needs, meeting the needs of that group. And then the next phase of life, which is where I am now, empty nester, and I'm really interested in longevity. I'm interested in how I can live longer, healthier, and how I can build muscle, and how I can stay strong, and how I can continue to leave a legacy for my children by being a woman in business that loves what I do and contributes to the world. So see, speak to who you are. Okay, I'll pause there. ओके।
सो यहाँ पे कैरन हमें बता रही है कि आपको लोगों की नीड के साथ, स्पेशली जब आप विमेन से बात कर रहे हैं, तो आप उसके पेन पॉइंट्स को, उसकी नीड को अंडरस्टैंड करके अगर आप उससे बात करेंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मदर से बात कर रहे हैं जो जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उसकी प्रायोरिटी उसके बच्चों की हेल्थ है, उसकी फैमिली की हेल्थ है, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं जो वो अपने घर पे यूज़ कर सकती है। वहीं अगर आप किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, कोई ऐसी लेडी जो मिड लाइफ में है, कॉलेज में है, तो उसका फोकस रहता है डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर, वेट मैनेजमेंट के ऊपर, इम्यून सिस्टम बिल्ड करने पे, अपनी अच्छी हेल्थ बनाने पे। तो आप उससे उस पेन पॉइंट को लेकर के बात कर सकते हैं। वहीं अगर आपका, जैसे आप किसी लेडी से बात करें जो फिट होना चाहती है, जो अच्छे बेसिकली अच्छे शेप में आना चाहती है, या अच्छी लाइफस्टाइल चाहती है, जैसे ब्रेन फॉग हो रहा है, स्लीप इश्यूज हो रहे हैं, या मूड स्विंग्स होते हैं, तो आप उसका वो पेन पॉइंट पकड़ के उससे बात कर सकते हैं। ओ। Okay. All right. And I know you'll have questions about this, so hopefully we'll have some time at the end, यस, but I'll keep going because each thing leads to the next. So if you remember in our goals today, once you kind of speak to the pain point, then the language. I'm very much a proponent of speaking words, watching our words, because our words represent our values. And when you speak from service, not persuasion, women will feel your heart. And I'm not saying men don't. I've built my business. My whole team is pretty much women. So it's so important to be honest, to be truthful, and to be authentic. And being of service. How can we meet the needs of the woman we're serving versus, well, you've got to do this and I've got to do this and I've got to get this goal. It's the resonance of that is off-putting. So come from service, not persuasion. करेक्ट। सो जब भी आप किसी से बात करते हैं, स्पेशली विथ वुमेन, वहां पे जब आप उसे पुश करेंगे, जब आप परसुएट करने की कोशिश करेंगे, तो वो शायद उतना अच्छा काम नहीं करे। बट अगर आप एक सर्विस देने की भावना से काम करेंगे, आप उसकी हेल्प करने की भावना से, बीइंग ऑनेस्ट होकर के, जब आप एकदम सच्चाई के साथ, ऑनेस्टी के साथ उससे बात करेंगे, तो वो उससे कनेक्ट कर पाएगी। और उसे मतलब बेसिकली एक वुमेन को समझ आता है कि आप अपने दिल से बात कर रहे हैं, और दैट्स हाउ शी विल बी एबल टू कनेक्ट, दैट्स हाउ वो आपसे कनेक्ट करेगी और वो आपकी बातों को अंडरस्टैंड करेगी। You're doing a great job. I don't know how you're doing that, but it's beautiful. Thank you so much. So, Great job. Karen, That's just a minute. you've got a task. Just a minute. I would like to inform everybody. So, at the end of this session, we'll be taking like question answer session. So we'll probably take 10 minutes to discuss whatever questions or queries you have. ओके, सो लास्ट में, सेशन के लास्ट में लगभग 10 मिनट हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो अभी इन द मिड आपके जो भी क्वेश्चंस है आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। बट ओवरऑल लास्ट में हम वैसे भी क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो आपको कैरन से जो भी डिस्कस करना है वो भी डिस्कस कर सकते हैं। दैट्स इट, या ओवर टू यू कैरन। Okay, we make a good team. Okay, so here's some examples, and you can certainly take a little picture of this if you like with your phones, because it takes practice, and I would suggest you actually practice this because it's so easy. Hey, and I fell into this too. I'm busy. I like to get to the point, but sometimes we rush too much. So it's easy to say, oh, you need this because we're so excited, right? We're so excited. And it's like, oh, you need this. No, that's language that doesn't connect. Instead, you say, this may or may not be for you, but I thought about you because I thought how busy you were, or you had busy kids, or you talk about wanting information about sleep, or you've discussed a desire to do something meaningful, like something about them. You make it about them. So uh, be careful not to be overexcited because that tends to turn people away. Excited, yes, but not so, oh, you just need this, right? Now, a business opportunity, yeah, it doesn't work so well with women. This is a wellness initiative that's making a real difference. I have found that as women, we want meaning and purpose and legacy and a sense of making a difference. And that language is what I like to use. Because again, I'm speaking for myself. But you change this according to who you are, right?
a question. Are you interested? You might really resonate with this. I don't know if you use that word or not, but it's a better word to connect. Oh, I want you to. Clearly, that's about you. When you make it about them, would you be open to exploring something that could support your goals? Make it about them. Come to a meeting. Very easy to say that. I'd love to introduce you to our vibrant community. I'd love to introduce you to Dr. Karen, maybe after this call. You might have someone that's a woman that is in some kind of wellness industry that you're meeting and connecting with, and you'd love her to meet me, but she wasn't able to be on this. So you'd say, oh, I'd love you to meet Dr. Karen. I just listened to her and I gained so much valuable insight. Would you like to listen? Because you make it about them. Okay. So language that connects, and we could go on and on about that. Oh, I'll pause. I'll pause. सो यहाँ पे कैरन बताती हैं कि जो लैंग्वेज आप किसी से बात करते टाइम यूज़ करते हैं स्पेशली विथ वुमेन, ये बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। एंड जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, आप एक्साइटेड होकर के बात करें, बट आप मेक श्योर करें कि आप ओवर एक्साइटेड ना साउंड कर रहे हैं, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ सेइंग कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अपनी रेगुलर कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे तुमको ये देखना चाहिए या आपको ये देखना चाहिए, उसकी जगह आप ये बोल सकते हो कि ये मे बी ये शायद आपके लिए हो सकता है या आपके लिए नहीं भी हो सकता है, बट मैंने इसे देखा तो मुझे आपका ध्यान आया, इसलिए मैंने आपको रीच आउट किया। अगर आप इस तरीके से उन्हें पिच कर रहे हैं तो वो थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे उनके साथ, उस चीज़ के साथ। इन इसके अलावा जब आप बोलते हैं कि ये एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी टर्म यूज करने की जगह अगर आप बोलते हैं ये एक वेलनेस इनिशिएटिव है जो कि एक्चुअली डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, आपकी लाइफ में भी क्रिएट कर सकता है, तो उससे वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। थर्ड, आप जब उनसे पूछते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं, इसकी जगह अगर आप उन्हें ये बोलेंगे कि ये आपके लाइफस्टाइल के साथ या आपके साथ बहुत अच्छा जा सकता है, रेजोनेट कर सकता है। सो आई होप ये अगेन ये इस पॉइंट से बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे जिस भी वुमेन से आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, आई वॉन्ट यू टू, जब आप बोलते हैं कि मैं चाहती हूँ कि आप इसे देखो या मैं चाहता हूँ आप इसे देखो, वहां पे अगर आप ये बोलते हैं कि क्या आप ओपन होंगे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ऐसा जिससे आपके गोल्स पूरे हो सके, आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके, तो अगेन इस लैंग्वेज से कोई भी विमेन आपके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी। एंड एट लास्ट, जब आप उन्हें बुला रहे हैं किसी मीटिंग के लिए तो आप उन्हें बोलते हैं कि आप मीटिंग में आ जाओ। अगर आप इस तरीके से बोलते हो उसकी जगह अगर आप थोड़ा सा अपने वर्ड्स को चेंज करके आप अगर उन्हें ये बोले कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमारी वाइब्रेंट कम्युनिटी का पार्ट बनेंगे, तो वो तो यहाँ पे क्लियरली ये आपके बारे में बात नहीं हो रही है, आप एक अप्रिसिएशन दिखा रहे हैं उनसे मिलने के लिए और चाहते हैं कि वो आपकी कम्युनिटी का पार्ट बने, तो दैट बेसिकली वो आपसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी क्या। Well done. All right. Okay. So you're probably thinking, okay, so I've got the language. What do I actually do? So here is my number 3. And I'd be interested in the chat if you could tell me who already has an email marketing system, what I call EMS, email marketing system. Just to say, yes, I do, or no. It'd be kind of interesting to see who has that. Because whether you have one, it's time to build it more consistently, or if you don't, then we could do a whole session just on email marketing. But this is really how you speak to your audience. So you build your list. You've heard this in network marketing. You need a list and you need to nurture that list. This is how you do it. It builds trust. It nurtures your leads. It provides valuable content that connects. And it drives signups to an eventual invite, something in person or virtual, and it can segment your audience into needs. So I'll pause there. या सो कैरन पूछ रहे हैं कि आप में से कोई है जिनके पास ईमेल मार्केटिंग का सिस्टम है, अगर है तो आप चैट बॉक्स में हाँ यस बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो नो बोल सकते हैं। तो हम आगे इन फ्यूचर ईमेल मार्केटिंग के ऊपर भी कोई सेशन प्लान करेंगे, क्योंकि जब आप अपनी लिस्ट बिल्ड करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, सो वो आपकी जो लिस्ट होती है वो एक एसेट की तरह काम करती है और उससे आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होता है। और ईमेल मार्केटिंग सिस्टम अगेन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको हेल्प करेगा आपकी लिस्ट में जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए। एंड कैरन,
just to let you know that I am getting a lot of no's in the chat box. We don't have email marketing system with us, but we do have WhatsApp system. Like a few people have WhatsApp community system basically. Yeah, That's a little different, marketing right? system. Yeah, So email marketing system is, I use ConvertKit, there's MailChimp, there's those ones you can certainly start for free, and it's very different than WhatsApp. And here is how you direct your leads into your email marketing system. You have a lead magnet. So a lead magnet is something that a freebie that you offer based on the needs of your client. And I'm going to give you some ideas about lead magnets. It doesn't have to be complicated. It can be a free guide. It can be a 2-page recipe book for the young moms that need healthy snacks for their kids. It can be a checklist, but it aligns with your ideal client. It's something you give to your contact for free based on their needs, and then their email goes into your email system, and then you start talking to them over and over and over. So I don't think the WhatsApp system is the same. WhatsApp, no. no. This is a system, and we could certainly maybe have a whole other session on this, because it's a systemized how to do it. But this is how you nurture your leads. Okay. So I have a bit idea about email marketing system and how lead magnet works. So let me just give them an introduction first. Okay, good. या सो लीड बेसिकली ईमेल मार्केटिंग सिस्टम एक सिस्टम होता है जहाँ पे आप आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स होते हैं उनके साथ आप ईमेल के थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं और फिर आप उन्हें रेगुलरली फॉलोअप्स देते रहते हैं. सो आप उनका ईमेल कैसे गैदर कर सकते हैं? आप उन्हें फ्री में कुछ ऐसे टूल्स दे सकते हैं जिसे हम बोलते हैं लीड मैग्नेट. बेसिकली लीड कलेक्ट करने के लिए एक मैग्नेट की तरह हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें आप एक फ्री गाइड दे सकते हैं उन्हें, रेसिपी बुक दे सकते हैं, चेकलिस्ट दे सकते हैं, कुछ भी आप चाहें. आप इसे अपने इंस्टाग्राम पे या अपने फेसबुक के थ्रू एड्स की तरह, या आप अपना लिंक, बेसिकली जो भी आपका फ्री गाइड का लिंक होता है, रेसिपी बुक है या चेकलिस्ट है, उसे आप एज अ फ्री टूल ऑफर करें जिससे वो ईमेल सबमिट करेंगे, रजिस्टर करेंगे आपके साथ. और इससे होगा क्या कि आपके पास उनका ईमेल आ जाएगा और उस ईमेल के थ्रू आप उनसे रेगुलरली उनसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, रेगुलरली आप उन्हें ईमेल भेज सकते हैं, जिससे वो एक बहुत अच्छा फॉलो अप टूल बन जाता है इन फ्यूचर आपके प्रोस्पेक्ट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए. दैट्स इट. I created a list of lead magnet ideas based on the segmented group, but for some reason the chat, it's not uploading in the chat. So not sure what you want me to do about that. But We can take the I screenshot. Well, so lead magnet, so this is a term that you just described, but again, the lead magnet needs to be aligned with the woman's life stage based on her needs at that stage. So I'm giving you some ideas. If you do use ChatGPT, do you use Yes. ChatGPT or AI Yes, we tools, do. whatever AI tool you use, you Yes. can do a prompt. Please give me lead magnet titles for young women, 20s, early 30s, that focus on these topics. Just put that in ChatGPT and they will give you lead magnet titles. And as I said, this doesn't have to be complicated. It can be one page, but it's something your contact wants and needs, and in exchange for their email that you can then put in your email system. So this would be your first step in developing your email marketing system. Choose an email platform and then create a lead magnet so you keep nurturing your leads based on needs. And as you can see, eventually, we're not talking about USANA yet, you notice. We're not selling anything. We're giving value based on what that person needs. And then we can eventually talk about matching USANA products to that need. But first of all, you've got to build trust. Yes.
सो हियर कैरन टेल्स यू, यहाँ पे कैरन आपको बताती है कि सबसे पहले आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। जो आप कैसे बिल्ड कर सकते हो, जब आप उन्हें फ्री में कोई सर्विस देते हो और वो आपके साथ रेगुलरली टच में आते हैं। ठीक है, अब ये आप कैसे कर सकते हो? ईमेल मार्केटिंग सिस्टम के थ्रू। जैसे हमने बात करी पीछे, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो। आपको गूगल पे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे ईमेल मार्केटिंग वाले। आप उनमें से कोई भी टूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसे ले सकते हैं। चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपना लीड मैग्नेट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम लीड मैग्नेट क्रिएट करते हैं, उस पॉइंट पे हमें लोगों की नीड को, जो हमारे प्रोस्पेक्ट्स की, हमारे कॉन्टैक्ट्स की जो नीड है, जो वांट है, जो उन्हें चाहिए एग्जैक्टली हम वो लीड मैग्नेट क्रिएट करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं? हमें चैट जीपीटी पे जाके उसको एक प्रॉम्प्ट देना है कि हमें, जैसे फॉर एग्जांपल आपके कॉन्टैक्ट में यंग वुमेन है 20 से 30 के बीच में, जो कि फाउंडेशंस बिल्ड करना चाहते हैं, जिनका फोकस है एनर्जी, स्किन, हॉर्मोन्स, साइकिल सिंकिंग, स्ट्रेस या फर्टिलिटी। आप इसके ऊपर चैट जीपीटी पे जाके प्रॉम्प्ट डालें कि आई वांट लीड मैग्नेट, मुझे लीड मैग्नेट टाइटल्स चाहिए और इस कैटेगरी को मेंशन करते हुए। तो चैट जीपीटी आपको जो भी ऑप्शंस, जो भी रिस्पॉन्स देता है, आप चाहें तो एक पेज का रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकते हैं और उसे इवेंचुअली फ्री में ऑफर करके आप उनसे ईमेल कलेक्ट करके देन ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। Beautiful. Okay, and again, this is a whole topic on itself about email marketing systems and build a lead magnet. So I thought today I'd kind of give you it all, and then you can kind of spend some time giving more detail later. Yeah. Okay. So then once you've nurtured your list and you've identified needs and you start to meet with people, I have something called the inviting formula. And the number one thing I want you to repeat over and over and over is a beautiful saying: be interested, not interesting. Isn't that good? I love that. Yes, yes. Why don't you say that in your beautiful language? या ओके, सो यहाँ पे कैरन बोलती है कि ईमेल मार्केटिंग के बारे में जैसे बात करी कैरन ने, हम होपफुली नेक्स्ट टाइम वी वुड लाइक टू इनवाइट यू कैरन फॉर ईमेल मार्केटिंग ओनली, जस्ट टू यू नो मेक श्योर you provide your entire knowledge on email marketing the very next meeting. And for now, let's carry this forward. सो आफ्टर ईमेल मार्केटिंग, जब आपके साथ, आपके पास ईमेल आ जाता है, आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, आप बात करना स्टार्ट करते हैं वुमेन से, उस टाइम पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जब आप इनविटेशन कर रहे हैं, खास करके इनवाइटिंग के टाइम पे, आपको ये ध्यान रखना है कि आप इंटरेस्टेड रहें अपने प्रोस्पेक्ट के अंदर, ना कि आप इंटरेस्टिंग बने। यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि हम कॉन्वर्सेशन का पार्ट है, हम कॉन्वर्सेशन का टॉपिक नहीं है। कॉन्वर्सेशन का टॉपिक आपका प्रोस्पेक्ट होना चाहिए, उसकी लाइफस्टाइल, जो सर्विस आप उसे देना चाहते हो वो होना चाहिए। दैट्स इट। All right, beautiful. Okay, so the inviting formula has many steps, but I don't want to overwhelm you. So we're only going to do the first little part today because we probably will have other calls, and I want you to practice. This is something very different than perhaps you're normally taught. So the inviting formula has a coaching twist because I'm a coach, where coaches listen. We listen. And the whole idea is we eventually want to invite them to do something based on their need, but you've got to figure out what their need is first. So one of the biggest mistakes people make in network marketing is they go straight to, oh, you've got to see this. This is the best, the greatest thing. That is so off-putting. So that's you telling. But the inviting formula is about listening. So the first step is preparing yourself. So you mentally preparing yourself for being in a place of service and joy. And that means putting everything else, whatever's happening in your life, we have all kinds of, always have stuff in our life, relaxing yourself, slowing down, having a beginner's mind, and setting the intention to be of service to the other person. So it's a very important step that we often miss, reminding ourselves that our role is to be of service. And step two is greeting. So I know we talk about it as an inviting formula, but actually inviting comes later. We have to greet first. We have to connect. We've got to listen, ask a lot of questions.
It's not about knowing, it's about listening. It's not about being interesting, it's about being interested. And this greeting phase might take a long time, and I know it can get frustrating. I've greeted people for years, and suddenly they say, you know that thing, that USANA thing you've been talking about? I'm now interested. Well, it only took 2 years. You know, it's it's the time it takes to build trust and to meet them where they are. So let's you can debrief that one first. अच्छा सो कैरन बताते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग में हम सबसे बड़ा हम हमारी सबसे बड़ी गलती होती है वो ये कि हम सुनते कम है और हम डायरेक्टली उन्हें अपना काम बताने पे फोकस करते हैं। सो हमें ये थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। नेक्स्ट टाइम आप जब किसी को इनवाइट कर रहे हैं, जब आप उनसे मिलने जा रहे हैं या आप उन्हें फ़ोन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें। आप एक सर्विस देने की भावना से, आप सामने वाले के अंदर इंटरेस्टेड होने के भावना से जाएं और थोड़ा खुशी से रिलैक्स होकर के स्लो डाउन होके एक बिगिनर माइंडसेट के साथ अपने प्रोस्पेक्ट से मिलने जाएं। आप ये इंटेंशन सेट करें कि मुझे आगे वाले की मदद करनी है और उस हेल्प वाले माइंडसेट से ही आप उससे जा करके मिलें। सेकेंड स्टेप ये रहेगा कि आप उनसे ग्रीट करें। आप जब उन्हें मिल रहे हैं, बातचीत करना स्टार्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के पर्पज से उनसे बातचीत करना स्टार्ट करें। ठीक है, मतलब आप उनसे बहुत ओपनली और बहुत फ्रीली बात करें। उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछिए ताकि आप उन्हें जान सके। और उसके साथ साथ आपको सुनना है पेशेंटली। आपको सुनना है उनके जो भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, ताकि आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जान सके, क्योंकि आपको यहाँ पे इंटरेस्टेड होना है, इंटरेस्टिंग नहीं। दैट्स इट। गो अहेड Beautiful. प्लीज। Okay, so when you're meeting with someone, there are certain communication qualities to keep in mind. And the first one is, we talked about already, be interested, not interesting. I know that sounds like we say that a lot, but sometimes we forget. We're looking for need. Don't be distracted by anyone. When you are with someone either on the phone or on Zoom, like here, be with them. The distraction is very off-putting and it does not build trust. Have a sincere facial expression, use the correct amount of assertiveness, pace the person, really kind of find out how do they like being fast, do they take things more slowly, try and pace that, communicate easily, make sure your body does just not distract the content, tell the truth, always a good thing. Know what you're talking about, of course, and communicate at their level of understanding. And again, most importantly, have the intention to make their life better. Sometimes the greeting phase is simply that. It's connecting to be able to get to know what's up with them, what's in their life, what's going on. You're going to take a lot of notes later to remind yourself of what their needs are. The purpose of greeting is to determine needs. यस करेक्ट। Great. सो यहाँ पे 10 क्वालिटीज हैं कम्युनिकेशन की। जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, तो इन 10 चीज़ों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो डेफिनेटली वो कॉन्वर्जेशन ज़्यादा बेहतर हो सकती है। सबसे पहले है कि अगेन हम सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। दैट इज आप इंटरेस्टेड रहें, इंटरेस्टिंग ना बने। सबसे पहला पॉइंट ये है। दूसरा ये कि आप अपने आप को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना करें। जब भी आप किसी से मिल रहे हैं या आप उनसे फोन पे बात कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि आप प्रेजेंट रहें उस कॉन्वर्जेशन के अंदर। थर्ड, सिंसेयर फ्रेंडली एक्सप्रेशन रहे आपके फेस पे। सो सामने वाला आपसे बहुत अच्छे से कंफर्टेबल हो पाएगा। कम्युनिकेट करें उनसे अच्छे तरीके से। करेक्ट लैंग्वेज यूज करें, करेक्ट तरीके से आप उनसे बात करें। उन्हें बहुत ज़्यादा पुशी नहीं फील होना चाहिए। आप उनसे सच बोलें, सच बात करें। मेक श्योर कि आपकी बॉडी भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्टेड सिग्नल्स ना दे बिल्कुल भी। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आप उनसे क्या बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। लास्टली, एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे आप अगर आगे वाले से कम्युनिकेट करेंगे और उसकी लाइफ के बारे में, और उससे आपका इंटेंशन होगा कि आप उसकी लाइफ के बारे में जानें, तो वो कॉन्वर्जेशन बहुत अच्छी जाएगी आपकी, और डेफिनेटली आगे वाला आपकी बात समझेगा, सुनेगा और अंडरस्टैंड करेगा। Beautiful. Now, the third step is to find a need, and I'm thinking, just in the interest of time as well, we'll just do these 3 steps. So, the greeting to connect, you're listening for a need. When you find a need,
you're going to write this down later, not while you're with the person, because it's not good to take notes like when you're in front of a person, but you are looking for a need, and then that is the need you're going to follow up with later. Sometimes I don't even mention it in that conversation. So say I'm speaking to a young mom. Sometimes I'm speaking to a young mom and she's got kids, she's so busy, she's stressed, and she's come to me for some advice about nutrition. I might say to her, I do have, this is where your lead magnet comes in. I do have a really cool small checklist about some healthy snacks for kids. Would you like that? Of course, she's going to say yes. Great. So I get her email address, and then I put that email address and in my email marketing system to send out the information. But all I'm doing is giving her something to make her life better. I haven't spoken about USANA yet. I might later, because obviously later I might mention, I was just thinking about you, and these shakes would be great for your kids. Would you like to try some? See, I've built trust first. So you're listening, you're greeting, you're finding a need, and then you're giving them something, not necessarily to sell, giving them something of value that meets that need. ओके। सो यहाँ पे कैरन बोल रही हैं कि आपको ध्यान रखना है जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे आपको उसकी नीड फाइंड करनी है, ठीक है। सो जैसे आप किसी यंग मदर से बात कर रहे हैं और वो अपनी फैमिली को, अपने बच्चों की न्यूट्रिशन को सीरियसली लेती है, तो आप उनसे उनके पूरे कॉन्वर्सेशन में आप उनसे पूछ सकते हैं कि मेरे पास कुछ हेल्दी शेक्स का रेसिपीज़ हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ हेल्दी स्नैक्स के ऑप्शंस हैं। आई हैव सम, बेसिकली आप अपना लीड मैग्नेट यूज करेंगे उस पर्सन को आगे देने के लिए, फ्री, राइट। आप अपनी सर्विस दे रहे हैं वहां पे उसे, तो इस तरीके से आप उनसे ईमेल लेके उनसे रेगुलरली टच में आ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। और फिर अभी तक आपने ये साना के बारे में कुछ भी बात नहीं करी है, यहाँ पे पहले आप ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। सो आपको, आप जब भी किसी से कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, आपको मेक श्योर करना है कि आप उनकी नीड आइडेंटिफाई करें। आप बाद में उसे लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। आपको बेसिकली फिगर आउट करना है कि आगे वाले को एग्जैक्टली exactly चाहिए क्या, एंड देन आप उस तरीके से उन्हें लीड मैग्नेट दे सकते हैं और उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। या Beautiful. Okay. So what are you going to invite them to? Because the next step after finding a need is inviting them to something. And you can do this, I would say, if you're just starting out in USANA, you really want to focus on using your sponsor, who is the person that knows about USANA, because you're new. When I first started in USANA, my first 3 months, I would always do 3-way calls with my sponsor, whether it's someone, whatever question they have, might be about the Cell Essentials, might be about the company, the USANA as a company. I didn't know because I was new. So I lent on my upline to be able to do the 3-way calls. Plus, they got to meet my upline. So you're edifying this community that you work with. And it can be about business or it can be about products. Don't make up information. Make sure you call on the experts to be able to answer questions for you. So in your first few weeks, do 3-way calls with your upline or just meet for coffee one-on-one. And I know this feels like the slow road, but it is the road. I still have people in my business that started with me 21 years ago because we built trust and we built community and we became family. And I didn't go fast. I did it this way. So in your first weeks, that's what you're focusing on. But then you can also invite, and I want to give you some really specific ideas for today. Of course, once you have your email marketing system, you invite to your newsletter. I make a newsletter every week. I commit to doing a newsletter about a topic that meets my target audience group that's come in through the lead magnet. You have local events, of course, that you can invite people to. You have virtual USANA events. You had some great women's health topics recently, and I've got a good idea for you with that one. And here is something. So all of those great, I know Debbie Baird did some great women's health talks for you that are Yes. recorded. So I'm going to suggest something called a watch party, and I'm going to give you an idea of what that means, where you use the recording of an expert
for your own small group. You could go to someone's home, there could be 4 of you, and you watch it on the TV together. Really cool idea. So you're using a resource. Or you can have a beautiful skincare experience. I know you've been doing some of those, having in someone's home, just a lovely skin spa experience, or put together a basket of the skincare products, and then people can borrow them for a few days. A few people on my team do that. So these are all things you can invite to. ओके। सो बेसिकली आप जब इनवाइटिंग करते हैं तो आप ये कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं, कुछ तरीके यूज कर सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोगों के साथ। यहाँ पे फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स, अगर आपने अभी रिसेंटली अपना योसाना बिजनेस स्टार्टअप किया है या आप एक बिगिनर है कम्प्लीटली, सो उस टाइम पे आप अपने स्पॉन्सर की हेल्प ले सकते हैं। आपके अपलाइन जो भी हैं आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आप जब किसी से मिल रहे हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को डायरेक्टली अपने स्पॉन्सर से मिलवा सकते हैं, या आप उनके साथ अकेले कॉफी डेट्स पे जा सकते हैं, कॉफी पे मीटिंग कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, ताकि आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, उनको अंडरस्टैंड कर सकें। और उसके साथ साथ कुछ आइडियाज दिए हैं यहाँ पे हमारे हमें डॉक्टर कैरन ने, जो हम यूज कर सकते हैं जब भी हम किसी किसी से मिलने जा रहे हैं, तो आप इनवाइटिंग के तौर टाइम पे यूज कर सकते हैं। आप अपना न्यूज़लेटर बना सकते हैं या लीड मैग्नेट बना सकते हैं। इससे भी इनवाइट लीड मैग्नेट बना करके आप उसे इनवाइट की तरह शेयर कर सकते हैं। या आप उन्हें, आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, आप उनको लोकल इवेंट्स में जो आपके रेगुलरली आसपास में या आपके एरिया में जो लोकल इवेंट्स होते हैं उसमें इनवाइट कर सकते हैं। या आप हमारे जो वर्चुअल यूसाना इवेंट्स होते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं 6 PM, आप उसमें उसमें अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। भी आप ऑन बोर्डिंग सेशन, प्रोडक्ट सेशंस हैं, आप उसमें इनवाइट कर सकते हैं लोगों को। या फिर आप चाहें तो आप उनके घर पे एक वॉच पार्टी अरेंज कर सकते हैं। वॉच पार्टी एज इन, जैसे डेबी ने एक सेशन कंडक्ट किया था, या हमारे जो भी लीडर्स हैं, नेहा है जो भी मीटिंग कंडक्ट करती है, आप चाहें तो आप 4-5 लोग मिल करके आप जो रिकॉर्डिंग होती है उस मीटिंग की वो टीवी में प्ले कर लें, और आप इस तरीके से 4 लोग मिलके जब आप एक्सपर्ट की जो भी एक्सपर्ट ने मीटिंग में जो भी बताया है योसाना के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, इस तरीके से आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ एट लास्ट आप स्किन केयर, जैसे स्किन केयर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, या स्किन केयर का बास्केट क्रिएट कर सकते हैं जो आप 3-4 दिन के लिए किसी को ट्रायल के लिए दे दें। वो फिर अपना फीडबैक लेके उन्हें अच्छा लगेगा तो वो डेफिनेटली आपसे आगे प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्ट होंगे और योसाना बिजनेस में भी कनेक्ट हो सकते हैं। That's it. Beautiful. Okay. So I think I put a little slide. Here's an example. So I love it. I saw this on Facebook. It's another USANA associate. So I took away the web link and the person's name. But this is a watch party invitation on social media about a topic that was already done by an expert. One of the scientists in USANA did this beautiful webinar, the true science behind GLP-1, what you need to know. Very important topic here in the United States. And so what she's doing is she's going to have a watch party where she's going to replay the recording, but she's inviting all her people. So she doesn't have to do the work. All she has to do is the inviting. And I thought that was such a brilliant idea. So reusing these fabulous talks that meet the needs of your audience, because you've had some great women's health talks lately. So I thought I'd just pop that up there to show you because I love this concept. श्योर। सो बेसिकली कैरन हमारे साथ एक आइडिया शेयर कर रही है, जहाँ पे उन्होंने फेसबुक पे एक साइंटिस्ट थी ओसाना की, जिन्होंने एक टॉपिक के ऊपर वॉच पार्टी अरेंज करी थी, उसका इनविटेशन उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था। तो इस तरीके से आप भी अपना वॉच पार्टी सेशन अरेंज कर सकते हैं। जो रिसेंटली डेबी के साथ हमने वुमेन हेल्थ के ऊपर टॉपिक पे जो मीटिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग, आप उसकी रिकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, आपको बस इनविटेशन करना है अपने कंसर्न लोगों का, आपके प्रोस्पेक्ट्स को आपको इनवाइट करना है उस वॉच पार्टी के लिए, और आपको वही डेबी का सेशन रिप्ले करना है। सो आपका जो एफर्ट रहेगा वो सिर्फ इनविटेशन में रहेगा, क्योंकि आपके पास सेशन रिकॉर्डेड है, और आपको केटर करना होगा आपके प्रोस्पेक्ट्स को। दैट्स इट। बट ये बहुत अच्छा आइडिया है लोगों के साथ कनेक्ट करने का, ट्रस्ट बिल्ड करने का, अपनी कम्युनिटी बिल्ड करने का। Yes, and just so you know, I mean, I have my own Zoom platform. So this meeting you're having here, I have do most of the USANA associates have a Zoom platform, would you say? यस। यस Yeah. वी। So on your Zoom platform, you can set up a webinar session. And if you need help with that, we can certainly talk about that as well another time. But you set up a webinar, you invite people. So you've got a list of everyone that registers. So you know everyone that registers.
and then you just do the recording as the webinar, and then you follow up with people and ask everybody that attended, what did you like? Because again, you're going to be interested, not interesting. What did you like most about that? So you've got all of these people that you can follow up with to talk about what they liked about that session. And the people that did not attend, you can reach out to them and say, I'm sorry you missed it, because you get a report of who does not attend. Would you like the recording? So this business is about talking and greeting and connecting and following up all the time. So this is a great way to to know what your audience is really interested in. या सो यहाँ पे अगेन कैरन हमें बता रही है कि आप चाहें तो आप अपना यही वॉच पार्टी सेशन जो है वो जूम पे भी कर सकते हैं। जूम पे आप अपना वेबिनार सेटअप कर सकते हैं अपना जूम पे, और आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इनवाइट कर सकते हैं। जब भी आपके जो भी प्रोस्पेक्ट ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करके आपकी मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, व्हाट डिड यू लाइक द मोस्ट। ताकि आप, क्योंकि यहाँ पे आपको आगे वाले में इंटरेस्टेड होना है, इंटरेस्टिंग नहीं होना है। एंड अगेन जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वॉच पार्टी की बात कर रहे हैं, अगर जो लोग वॉच पार्टी मिस कर देते हैं, आप उन्हें लेटर ऑन रिकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं और फिर आगे उन्हें फॉलो अप कर सकते हैं। इस तरीके से भी आप ऑनलाइन भी अपना वॉच पार्टी सेशन अरेंज कर सकते हैं और इस टूल को यूज कर सकते हैं ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। या क्या? Beautiful. Okay, so one of the questions I was asked to speak about is the biggest mistakes brand partners make in the business. And of course, you can probably tell from the way I've been speaking today is you leading with the product, not the person. The person is what drives what you eventually invite to and what eventually you might speak about, but leading with the product, not the person. And copying and pasting instead of connecting. So yes, I use ChatGPT. I love ChatGPT, but it's a way that gives me a bigger understanding of maybe ways to say things to my audience that's different than how I might say it. And then I tweak it. So it's a tool, but it's not a copy and paste. And talking about the business too soon. Again, I know we want to talk about it quickly because we do have deadlines of things that we want to achieve. But if we rush too fast, it's about us, not them. So the pace has to be up to the person. Now, the other day I had someone approach me directly out of the blue, of course, never out of the blue, but someone that had found me wanting to talk about the business. So we got straight to it. And she signed up, like my first conversation with her, she became a brand partner. Now, she drove the action, but you've got to meet the person where they're at. And not nurturing your audience, you've got to build trust. And you build trust by being authentic, providing value, showing you're interested and caring about them. And trying to be for everyone. That's why that life stage of a woman's, the life stages of a woman's life is such a good way to kind of think about segmenting and targeting, niche down, speak directly to the woman you want to serve, her life stage, struggles and desires. ओके, सो यहाँ पे अगेन हम कुछ बड़ी मिस्टेक्स की बात कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, जब हम अपना यूसाना बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को पिच करते हैं, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो हम करते हैं। हमें अब प्रोडक्ट को तो ऑफ कोर्स केटर करना है, बट पहले हमें पर्सन को केटर करना है, क्योंकि हमें पर्सन के साथ एक रिलेशन बिल्ड करना है, उसके साथ अपना बिजनेस बिल्ड करना है। तो यू हैव टू, आपको ध्यान रखना है कि आप पर्सन में इंटरेस्टेड रहें और डायरेक्टली प्रोडक्ट पे लीड ना करें। आप पहले पर्सन को जाने, उसकी नीड जाने, उसके बाद उस तरीके से जो भी आपको सही लगे उस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के तरफ लीड करें। सेकंड, कॉपी पेस्ट करना कनेक्ट करने की बजाय, ये सबसे बड़ी गलती अगेन जो हम करते हैं। हमें एक सेट ऑफ प्रोसेस कभी भी सेम नहीं हो सकता, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब आप 4 लोगों के साथ सेम प्रोसेस नहीं यूज कर सकते, राइट? सो आपको हर एक के साथ अलग अलग कनेक्ट करना है, अलग अलग प्रोसेस यूज करना है, जिससे आप उनके साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सके, रिलेशन बिल्ड कर सके।
थर्ड, हम बिजनेस के बारे में बहुत जल्दी बात करने लग जाते हैं। दैट इज समथिंग जो कि अगेन एक बड़ी मिस्टेक है, हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। आप पहले पर्सन को जाने, उसकी नीड आइडेंटिफाई करें, उन्हें क्या चाहिए ये समझें, और उसके बाद फिर अपने बिजनेस को कस्टमाइज करके अपने तरीके से उन्हें प्रेजेंट करें, ताकि उन्हें समझ आ सके, वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। एंड लास्टली, अपनी ऑडियंस को नर्चर किए बिना डायरेक्टली काम पिच करना, अगेन वो भी गलत है। सो आप अपने ऑडियंस को पहले नर्चर करें, सेम थिंग आप उनकी नीड आइडेंटिफाई करें, उसके साथ बैठें, कनेक्शन बिल्ड करें, ट्रस्ट बिल्ड करें, और फिर उन्हें योसाना बिजनेस पिच करें। लास्टली, सबके लिए मतलब बेसिकली आप हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो सकते। तो आप नीश डाउन करें कि आप किन से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं। हो सकता है आपका एज ग्रुप रहेगा कॉलेज की ऑडियंस, या ऐसे वुमेन्स जो कॉलेज में है, मिड लाइफ में है। आप अपनी नीश डाउन कर सकते हैं कि आप किन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। आप चाहे तो आप किसी भी एक सिंगल कैटेगरी के साथ डील कर सकते हैं। आपका टारगेट हो सकता है कि आप यंग मदर्स के साथ कनेक्ट करें, या आप ऐसे हाउस वाइफ्स के साथ कनेक्ट करें। और उनके, क्योंकि आप उनके डिजायर्स को, उनकी स्ट्रगल्स को समझ पाते हैं, तो अगेन आप नीश डाउन करें, और सबके लिए होने के बजाय आप एक स्पेशल कैटेगरी के तरफ डायरेक्ट करें और उनके साथ काम करें। That's it. Beautiful. Okay. And then my last slide before we take questions. Someone asked in the chat, is this live? And yes, we're very much live, aren't we? We're like really live today. Yeah. So the Yeah. final one is my action. Yes, always got to take action after listening to a webinar. So you see, and it might surprise you because the inviting formula, the most important feature of the inviting formula is greeting. And I have not covered the other steps of the inviting formula. We're going to have to save that for another time. But I haven't talked about following up. That's a whole important section. But you can't go there until you've practiced greeting. So for the first 20, 30 minutes of every day, I want you to greet to connect. 10 per day will grow your business. Greeting, sending a text or a WhatsApp saying, I was just thinking about you. How are you? Or I just listened to a talk on women's health because it might have been that one of those that you really resonated with, and it made me think about you. How are you doing? That's all you have to do. You're connecting, connecting, connecting. So that is your action step. Isn't that amazing? It's probably not what you expected, but it's the most important feature of building your USANA business is making true connections. And of course, after you greeting to connect, then after you can invite them to something, and that is a whole step in and of itself. यस, अग्रीड। सो एट लास्ट डॉक्टर कैरन हमें एक्शन लेने के लिए बोल रही हैं। एक्शन में बेसिकली आपका होमवर्क रहेगा सॉर्ट ऑफ, जिसपे आपको एवरी डे 20 to 30 मिनट्स लोगों के साथ कनेक्ट करना है, उन्हें ग्रीट करना है। अब आप उनसे कैसे ग्रीट कर सकते हैं? आप चाहे तो व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, आप कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, आप पर्सनली, आप कहीं बाहर हैं, आप किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनसे डायरेक्टली भी जाके कनेक्ट कर सकते हैं। सो इधर वे आपको एटलीस्ट 10 लोगों के साथ एवरी डे कनेक्ट करना है। अब आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, सो उस पे कैरन ने हमें कुछ टिप्स दिए हैं। आप उन्हें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कि मैं जस्ट आपके बारे में सोच रही थी, आप कैसे हैं। सो जब आप इस तरीके से किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा कि आपने उनके बारे में सोचा, और वो डेफिनेटली आपके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे। सो इस तरीके से ये एक्शन आपको एवरी डे लेना है, ये आपका होमवर्क है। एंड डेफिनेटली वी शुड वर्क ऑन दिस थिंग, हमें इसके ऊपर काम करना है। एंड कैरन, आई होप यू आर एक्सपेक्टिंग सम रिजल्ट्स आउट ऑफ अस, राइट? Yes, yes, yes. So I'm going to stop sharing. And I think, yeah, because we did want to leave some time for questions. So we got a little bit left to answer any questions. श्योर। सो अब हम कुछ टाइम लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सो ओवरऑल आपको कैरन, डॉक्टर कैरन से जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, एंड वी डेफिनेटली गेट बैक टू यू, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे उसके लिए। सो क्विकली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आप डिस्कस करना चाहते हैं, आप जल्दी से चैट बॉक्स में टाइप करिए। सो कैरन, प्रदीप इज आस्किंग हाउ आर यू? Ah, that's so sweet. Yes. I'm great. I'm just starting my day and I'm going to work out after this. How's that? Going to Wow, my wonderful. boot camp. Yeah, wonderful.
Okay, so people are actually appreciating your session a lot. Good, 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 good. And I know I've left a lot of more detail, like the email marketing system. There'll be a lot of questions about that. And then the second half of the inviting formula, which is the inviting part and handling objections. There's always so much to cover, but I really wanted to make sure you got the most important greeting to connect and remembering the person, not the product. So these are all really crucial things that you don't often hear about that has been so important to the success in my business. Yes, absolutely. So, Karen, we do have a few questions. Number one, what email leads platform do you use? I use ConvertKit. I'll put the name in the chat box. ConvertKit. That's the one I use. Oh, I spelled that wrong. Sorry. Convert Kit. Oh, I think it's called Kit now. Also, um, MailChimp is another one. I'll write that in the chat box. You can certainly, and you can always go to ChatGPT and Yeah. say, please compare and contrast email marketing systems for me, so you can see the differences. यस सो कैरन जो ईमेल लीड मार्केटिंग टूल यूज करती हैं वो उन्होंने चैट बॉक्स में डाला है। अदरवाइज आप चैट जीपीटी पे भी जाकर के कंपेयर कर सकते हैं कुछ ईमेल मार्केटिंग टूल्स। आपको वहां पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो हमारे एरिया में अवेलेबल होंगे और इजीली एक्सेसिबल होंगे। सेकंड, कैरन, अगेन वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। सो सेकंड क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क दैट इज व्हाट 3 products डू यू रिकमेंड फॉर वुमेन्स हेल्थ? 3 products? Yeah, 3. Okay, so see, that's an interesting question because women's health is a broad topic. So, of course, from the Dr. Wentz's message, the Cell Essentials is always the foundation. So that's just a no-brainer. The Cell Essentials, and even if a woman can't afford a Cell Essentials in its full dose, half a dose daily, so it lasts 2 months, not 1 month. There's many ways to work around that, but that is the basic. So Cell Essentials, and then basic gut health is gut. The gut is the cornerstone of everything. So you have the probiotic in India, correct? No, we have Fiber G. Fiber. Fiber G. Okay, so Fiber G is that may not be my first go-to if she only wants 3 products. You have Biomega. Yes, we have. Yes, Biomega, which is fish oil, which is an anti-inflammatory. Now, other than the Cell Essentials, then you want to say, look at the life stage. So are they looking for healthy eating and weight? So you might move to the shakes, one shake a day. Nutrition. Yeah. So are they more stressed? So I might move to Biomega. So I don't know that I do a broad range, just 3 products other than the number one Cell Essentials. Everything else is based on need. ओके। सो जो टॉप 3 प्रोडक्ट्स वुमेन हेल्थ के लिए रिकमेंड करती हैं डॉक्टर कह रहे हैं, नंबर वन इज सेल एसेंशियल्स। वी डोंट हैव सेल एसेंशियल्स ओवर हियर, वी हैव कोर एसेंशियल्स। सो हम Core कोर Essentials. एसेंशियल्स रिकमेंड कर सकते हैं, बायोमेगा रिकमेंड कर सकते हैं, और थर्ड प्रोडक्ट आप उनकी लाइफस्टाइल देखें, अंडरस्टैंड करें उनकी लाइफस्टाइल में क्या लूप होल है, जो भी आप चाहेंगे उन्हें हेल्प आउट करना, जिस भी प्रोडक्ट से उन्हें हेल्प हो सकती है उनके लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए। अगर उन्हें वेट मैनेज करना है तो आप उन्हें न्यूट्री मील रिकमेंड कर सकते हैं। कंसिडरिंग उनका लाइफस्टाइल कैसा है आप उन्हें कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, बट कोर एसेंशियल इज इंपॉर्टेंट, ये आप डेफिनेटली रिकमेंड करें, राइट? ओके, Yes. या। So the next question that we have is there any other way to invite apart from email marketing formula? Do you suggest anything else apart from email Oh, marketing? yes. I tend to do most of my inviting by text or WhatsApp, Okay. or I mean, in person, as you're just meeting people in your life and inviting them to something or watch something, or have a skincare something. The best way of inviting is in person, no doubt about it. Yes, Best way. absolutely. Then kind of text, WhatsApp personally, not as a group, just one-on-one. Email marketing is really not an inviting part. Email marketing is a way to nurture people that are already on your list that maybe said no, but they're still kind of interested in having topics. But I would say in person and WhatsApp or texting. ओके।
सो ईमेल मार्केटिंग बेसिकली इनवाइट का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है, इट्स अ वे, एक तरीका है जिससे आप लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप ईमेल मार्केटिंग को ड्रॉप करके कुछ और लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मली व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं। वो बहुत अच्छे, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा लोगों के साथ जल्दी कनेक्ट करने में। एंड ऑफ कोर्स इन पर्सन आप चाहें तो आप आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उन्हें जाके मिल लें, फेस टू फेस उनके साथ मिले, वन ऑन वन उनके साथ मीटिंग शेड्यूल करें, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा आपको कन्वर्ट रेशो देगा, डेफिनेटली। सो या, so there's another question, oh god, we have a lot of questions, Karen. So we have another question, that is ki, how do you approach to unknown, basically how do you connect with unknown people? Unknown. Okay. So I have a theory that no one is really unknown. Wow. We're all connected. Yeah. So when you put out information like on social media about topics you're interested in, you just never know who's looking. You just never know. And people will find you when they're resonating. Like if you use hashtags that are related to hashtag women's health or hashtag weight loss, then people find you and then they'll reach out to you. So social media is kind of the best way to reach unknown so-called people, or networking groups, going and showing up in places, or just being every social situation. Just know that all these people that potentially unknown are opportunities for you to connect. Absolutely. Dr. Karen says कि there's nobody who is unknown. कोई भी अननोन नहीं है, आप सबको जानते हो, आप किसी ना किसी तरीके से हर किसी के साथ कनेक्टेड होते हो, बट स्टिल अगर आप किसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, और सबसे इजी तरीका है लोगों के साथ कनेक्ट करने का सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पे कोई रेलेवेंट हैशटैग सर्च कर सकते हो, उसमें उस हैशटैग को फॉलो करने वाले या लाइक करने वाले आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, आप उनसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक म्यूचुअल ग्राउंड होगा। सो दैट्स हाउ, इस तरीके से यू कैन, आप कनेक्ट कर सकते हैं नोन लोगों के साथ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is, sometimes a person says that sometimes there are a kind of prospects who does not respond to us or stop interacting after knowing about your son or after knowing the compensation plan. So how to, what to do with those people? Well, you keep them kind of on your list. You have different lists, and you keep you on your list that say people that do not respond, but they're still on your list. So if you have something, and remember their needs, make sure you always remember their needs. So it might be like 6 months later, and if something comes up that say there's a topic that's a health webinar, it's a topic that they're interested in, you just send them a lovely text saying, hey, I know we chatted before, but there's a webinar coming up that I thought you might be interested in. Let me know if you'd like to have the link. Never give up. It's when we give up that we're so close to closing. You heard that the average person needs 7 or 8 contacts before they say yes. So you just keep them on the list, give them a little break, but then reach back when there's a need, something comes up that's a need that they've expressed. Yeah. So, Karen, there's a saying in direct selling industry, in network marketing, that your fortune is in your follow up, right? Yes. So, Yes. ओवरऑल अगर आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है और आपके साथ इंटरेक्शन, मतलब बेसिकली अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं आपके साथ, तो आप उन्हें कभी भी छोड़िए मत, आप उन्हें फॉलो अप में रखिए। आप उनके साथ टच में बने रहिए, आप उनका कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए अपने साथ, ताकि कोई भी आप पोस्ट डाल रहे हैं तो वो उन्हें विजिबल हो, क्योंकि अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रहे हैं बट वो आपको देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग, दे आर लुकिंग एट यू। सो लेट्स से आफ्टर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब भी आपकी कोई मीटिंग हो रही है, आपको ध्यान में रखना है उनकी नीड क्या है, और उनकी नीड के हिसाब से अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई भी वेबिनार आ रहा है, तो आप उन्हें एक बार अप्रोच कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि हमारा ये वेबिनार आ रहा है जो शायद आपको इंटरेस्ट कर सकता है, क्या आप एक बार देखना चाहेंगे? सो जब आप इस तरीके से उन्हें अप्रोच करेंगे, यू नेवर नो कि कब वो आपको यस रिस्पॉन्ड करे, और हो सकता है वो वापस आए आपका ये सारा मीटिंग देखने के लिए, आपका वेबिनार देखने के लिए, इवेंट देखने के लिए, और हो सकता है तब वो आपके साथ ज्वाइन करे। आपको उनको फॉलो अप में रखना है बेसिकली। Wonderful. Maybe one more question. या, विच वन इज बेस्ट फॉर वेट लॉस फॉर वुमेन? न्यूट्रीवील। या, डू यू रिकमेंड एनी अदर प्रोडक्ट्स, डॉक्टर कैरन? Well, of course. Now, weight loss for women is another big topic. I want you guys to realize that you've got to take a big topic and you've got to niche it down to needs. So
what is behind the weight struggle? And what age group is this woman falling into? Is it stress related? Is it emotional eating? Is it not having the right foods around? It's asking more questions. So here's the answer to addressing weight loss for women. Ask more questions. Be interested, not interesting. यस एब्सोल्युटली सो जब भी आप वेट मैनेजमेंट एड्रेस करना चाहते हैं कोई भी प्रोडक्ट रिकमेंड करने से पहले आप उनसे क्वेश्चंस पूछें उनके लाइफस्टाइल के बारे में उनकी डाइटरी हैबिट्स के बारे में उनका जो भी फूड वो कंज्यूम करते हैं रेगुलर बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछें ताकि आप इंटरेस्टेड हो उनके अंदर और आप उनका लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड कर सकें और देन फिर आप फाइनली उनको कोई सोल्यूशन रिकमेंड करें. So, Karen, there's two more questions actually, which I can say. There's a lot coming up, of course, but we know that we have a foundation of time, and also just to even I would like to personally want you to share this thing. Can you share your journey in like in just 2 minutes, 3 minutes, your short journey basically, so that we can tell people about you and your experience, and we get to inspire from your experience so far. In USANA, you mean? Yeah, USANA, yeah. yeah, you So sound I joined USANA 21 years ago because my sponsor was someone that was very successful in USANA and was really following a wellness path that I really believed in. And I really wanted to move away from the disease model of healthcare that I was working into and work more on the preventive side. And I felt Dr. Wentz's story, who he is, his vision, and understanding cellular nutrition was what I really wanted to educate people about. So I joined. I didn't know anything really when I first joined. And in those first 3 months, if you remember what I said, is anyone I spoke to, I would bring in my sponsor to do a 3-way call and explain any questions they had. What I actually did when I first started is I thought about 4 of my closest friends and I said to them, this is exactly what I said. I've just joined a fabulous wellness team. I don't know much about it because I'm brand new, but I thought about you. It might be something you're interested in. It might not, but would you be willing to get on a phone call? Then we didn't have Zoom then, phone call and just learn a little bit about it. So those 3 people joined a phone call and they all joined my team. So wonderful. we all, because they got the vision. And it wasn't a sale, it was a vision. It was capturing a vision of change, a vision of how we could be part of a solution for pain and suffering in other people. And those 3 people are all still with me after 21 years because we all kind of grew together. And I went gold in about 2 years and have supported, of course, my team with team meetings every week. We have a team meeting every week. Doesn't matter if one person turns up or 10 people turn up, and been to pretty much every convention since, and have stayed true to USANA because of Dr. Wentz's vision. And I'm a big supporter of Sonovive Medical Institute, been there many, many times. And to me, that's also a very important part of my mission, is to help people see a bigger vision of the possibilities of health and to realize that disease is not inevitable, that health does take action. You need action, you need a good, solid advice and nutrition. And that's kind of been my vision all along, and wanting to do it as part of a team. So the most successful path in USANA is to build a team, is to build a team that resonates with who you are, and being honest, because most of my team are female, as I said, and we have similar interests, we have similar paths in our lives, and we become family. And that's really important. So that's That's my short amazing. version. That's absolutely amazing. Your journey is very inspiring. Thank you. Yeah. So, one last question that we have is when you're working online with email marketing. So, let me just recite the entire question. So, when you're working online with email marketing, how do you handle objections? Because it's a bit easy offline to know more about the person and his or her lifestyle, but online, what helps you build curiosity with the other person's mind? Yes. So the simple answer to that is I take them offline for a quick conversation.
there might be something about what they're saying. And I might even say someone is handling it and their objection comes up online. I'll text them maybe or email them and say, I'm really curious about your question you asked me. Let's jump on a call and just discuss it. So I try and take them offline and develop a more personal connection. It's very, because personal connection is what creates longevity in this business. It really does. And some people may not want to do that, and that's okay. Just put them in the list that said did not want to connect, because need to have really good follow-up system. But it's kind of like on social media. You want to get people off social media into your newsletter system, because your newsletter system is real estate you own. That is you speaking directly to your audience, whereas social media changes all the time, so you just never know who's watching. But you want to try and build that more intimate connection. Absolutely. So, Dr. Karen says, iska Pratima basically who asked the question. So, Pratima, email when we are doing email marketing, जब आप email marketing कर रहे हो, अगर आपके पास कोई objections आते हैं, अगर आपको कोई respond करता है, तो आप इस तरीके से उन्हें pitch कर सकते हो, आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर आपको ये question आया है, how about हम call पे आएं और call पे मैं आपको आपके questions का answer दूं. सो इस तरीके से आप उन्हें ऑफलाइन लेकर आ सकते हैं, आप उनके साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, एंड देन यू कैन पिच देम द सोल्यूशन. उनका जो भी नीड है उसका सोल्यूशन आप उन्हें पिच कर सकते हैं. और अगर कई बार ऐसा होता है कि लोगों ने आपसे क्वेश्चन तो पूछा बट वो आपके साथ कनेक्ट नहीं करना चाहते, तो आप उन्हें डोंट वांट टू कनेक्ट वाली लिस्ट में डाल लो और उनको आप आगे जाके फॉलो अप कर सकते हो. सो दैट्स हाउ, इस तरीके से आप उनके साथ इन्वॉल्व हो सकते हो इन द लॉन्ग रन. So far, no more questions, Dr. Karen, Wonderful. and we Let's had a see. I think I've got a wonderful lovely time. little chat here. I love these Hats. little aren't they nice? Yeah, their reactions basically. Wonderful. Yes. So the reaction says that how much we loved your session today, and we would definitely like to have you on board with us very soon. Talking about follow-up maybe, or talking about email Yes. marketing system maybe, whatever you pick. Hmm. But we Hmm. would like to have you again and again and again and so on. You're an Well, amazing Anshul, person you and did a guide. fabulous job too. We should all applaud you for your beautiful work with me today, because that's not easy to be able to repeat. And hopefully that enriched everyone's experience having you here. I Thank you. tried my best. Thank you so much for your appreciation. Thanks a lot. So, with this, let's close the session. It's already time. And thank you so much for giving an extra time to us. And we definitely enjoyed your session today, and we would want you come back again. All right. All right, everyone. Have a beautiful rest of your evening, and know that you can do it. Just listen, be curious, be interested in people, really want to serve people, and have that intention to make their life better. That is the key. That is the key to longevity in this business. And USANA as a company resonates with that. I really feel like from the corporate level at the very top, that is the mission, to make our life better as brand partners so we can make other people's lives better. And it's a beautiful mission to have, and a beautiful company to align with. Yeah. Thank you so much, Karen. Thanks a lot. So Okay, you have a everyone. great day ahead. Bye bye. Thank you so much, Bye-bye. everyone, for joining this session. Bye bye.